Good morning, all of you. So, ଆଜିର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ସେସନଟି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଗରୁ as usual ମତେ ଟିକେ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଭିଡିଓରେ କିଛି ବଫରିଂ କି ଅଡିଓ ଅନକ୍ଲିୟର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବନି ଯୋଉମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମତେ ଏଇଠି ଲାଇଭ୍ ଚାର୍ଟରେ କେହି ଜଣେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା I'm giving 2 minutes to let me know. And after that, I will simply assume ki sabu clear achi and I will go through the class. Okay. Okay. Thank you. Jo mane bhi kahile clear achi. Thank you for letting me know. क्लास स्टार्ट करबा आगुरु एठी मु किछि बेसिक इन्फॉर्मेशन दउची कोर्स रिलेटेड जो माने भी ओएस आउ आईएएस 2026 आउ 27 पई ए ईयर पई की प्रिपेयर होथिबे ताहले तांको पई एठी फाउंडेशन बैच लॉन्च हेची जोथरे की प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू तीनटा जाको कवर होची एंड फाउंडेशन बैच बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रहिची दीटा जाको मीडियम रे अवेलेबल ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम रे वन ऑन वन मेंटरशिप रो प्रोविजन भी एठी अवेलेबल अछि नंबर नोट डाउन करनेबे जदि आउ किछि फर्दर डिटेल्स दरकार ताहले ए नंबर रे जाईकी जोटा स्क्रीन रे प्रोवाइड हेची ए नंबर रे जाईकी कांटेक्ट करिकी आपण क्लास जॉइन करि परिबे ठीक अछि एंड एज यूजुअल मु क्वेश्चन समस्त को रीड करबा को ताकू प्रोसेस करबा को ब्रेनस्टॉर्म करबा को निजे निजे 10 सेकंड्स मु पर क्वेश्चन मु रीडिंग टाइम देबी समस्त को ओके तापरे आमे जेमती डिस्कस करे introduction through a brief introduction to the point तापरे बॉडी जहा जहा क्वेश्चन रा डिमांड अछि ताको केमती हमें बॉडी रे एड्रेस करिबा केमती ताको स्ट्रक्चर करिबा दो मु पूरा एठी 250 वर्ड्स रे कि 300 वर्ड्स रे एठी आंसर तो लिखिबिनी बट आई विल गिव द आइडिया गोटे स्ट्रक्चर मु बतई देबी इट विल आल्सो इंक्लूड कि शॉर्ट फॉर्म रे मु किछि कहि पारे सो आई विल हाईली एडवाइस कि समस्त पेन एंड पेपर नै कि बसिबे जदि कहा नोट रे से किछि कांसेप्ट इन्वॉल्व नाही तो सेठी से माने नोट डाउन करिवे एंड कंक्लूजन ऑब्वियसली आमे गोटे कंक्लूजन रे ताको एंड अप करिवा फर्स्ट क्वेश्चन एठी समस्ते रीड करंतु क्वेश्चन कोन कहिला आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टू रीड द क्वेश्चन रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सेग्रीगेट करिवे कि कोन पचारि छि आ केतेटा पार्ट रे पचारि छि ताको एड्रेस करिवा पई ओके ठीक अछि So question हमें पढ़िबा question कहिछि examine the administrative and military contribution of whom of the slave or the Mamluk dynasty in consolidating the Delhi Sultanate in India. मामलुक डायनास्टी ऊपर पचारछि मामलुक डायनास्टी रो फर्स्ट तो पचारछि तार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन को एठी एग्जामाइन करबा को देन मिलिटरी कंट्रीब्यूशन को एठी एग्जामाइन करबा को इन कंसोलिडेटिंग द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया तो आमे फर्स्ट इंट्रोडक्शन दबा मामलुक डायनास्टी ऊपर इंट्रोडक्शन रे कोन कोन एटी फैक्ट आपण एटी मेंशन करि परिबे जो मामलुक डायनास्टी रहला मु एटी एमडी लिखिछि ओके एंड थ्रू आउट द क्लास भी एमती शॉर्ट फॉर्म्स रा यूज अबाउट टू अवॉइड एनी वेस्टेज ऑफ टाइम सो मामलुक डायनास्टी जो रहिला 1206 रु नेकी 1290 जाय जे रूल करथिले तांको आल्सो तांको स्लेव डायनास्टी भी कुहा जाउतला कौन कुआ जाउतला स्लेव डायनास्टी ठीक अछि एंड दे लेड द फाउंडेशन ऑफ
दिल्ली सल्तनत जो रूलर्स थिले मामलुक डायनास्टी रो जेमती हमर कुतुबुद्दीन ऐबक हेले कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश and Ghiyasuddin Balban एमती किछटा राजांग ना एटी मेंशन करिवे एंड कहिबे कि सेमाने गोटे क्रुशियल रोल प्ले करिथिले इन कंसोलिडेटिंग द पॉलिटिकल अथॉरिटी थ्रू स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिटरी मेजर्स नाउ बॉडी रे हमें एमती तो आंसर पेपर रे लिखिबे ना एमती बॉडी बोली के एटी हेडिंग किछि देबेनी मु एटी खाली अंडरस्टैंडिंग पाई के एटी बॉडी लिखिछि एमती डायरेक्ट हेडिंग सब हेडिंग देके स्टार्ट करिवे ताको बुलेट पॉइंट्स ता तळे इंक्लूड करिवे एग्जांपल्स जदी कोठी रेलेवेंट थिबो एमती ऊपर बॉडी लिखिबेनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशंस ताकर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन कोन थिला फर्स्ट देखिबा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन रे हम एक नंबर रे देखिबा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जो इतुतमिश थिले से कोन करथिले सी गोटे ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर गोटे ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से क्रिएट करथिले किए करथिले इल्तुतमिश ठीक अछि ऑफ द सल्तनत जोटा कि सेंट्रल अथॉरिटी जो दिल्ली रे थिला ताकू स्ट्रेंथन करथिला की डिपार्टमेंट्स कोन थिला से जो ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रे जेमती की दीवानी विजारत कोथि पई थिला फाइनेंस पई थिला एंड दीवान ई अर्ज एटा मिलिटरी दे वर डेवलप्ड देन तांकर आउ कोन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन थिला इक्ता सिस्टम कोन इक्ता सिस्टम होची लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट ताको इक्ता कहउतले जोटा कि नोबल्स मानु को ऑफिशियल्स मानु को ग्रांट होतिला इन रिटर्न फॉर मिलिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड ई जो लैंड ग्रांटा होतिला तार ई कोन हेल्प करूतिला दिस हेल्प्ड इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस व्हाइल एंश्योरिंग रेवेन्यू कलेक्शन थर्ड हमें कोन देखिबा लेजिटिमाइजेशन ऑफ रूल इतुतमिश जे थिले से फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑब्टेन करितिले फ्रॉम अब्बासीद कैलिफेट जे कि तांकर लेजिटिमेसी as ऑफ द सल्तनत आहुरी स्ट्रेंथन करथिला फोर्थ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोनार्की strengthening of monarchy रे बलबन स्पेसिफिकली सी एम्फसाइज करितले द थ्योरी ऑफ किंगशिप projecting the sultana's gods okay gods representative on earth zil illahi term टा होची zil e ilahi सो से जो नोबल्स मानकर जो पावर थिला ताको रिड्यूस करथिला और एबोलिश कर देथिले द पावरफुल चहलगानी ग्रुप द पावर ऑफ चहलगानी ये कौन थिला एटा गोटे 40 टा नोबल्स कर गोटे ग्रुप थिला नेक्स्ट हमें देखिबा मिलिटरी कंट्रीब्यूशन एटा त हमें देखले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन then we will see military contribution first asibo defense against external threats
एक्सटर्नल थ्रेट्स ठीक अछि जो मामलिक रूलर्स माने थिले दे सक्सेसफुली रेजिस्टर्ड द रिपीटेड मंगोल इन्वेजन Mongol invasion. So, safeguarding the northern India. Second, expansion and consolidation. Expansion and consolidation to military campaigns. जो से मैंने कंडक्ट करुतले इट हेल्प टू कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर रीजन्स लाइक जेमती कि पंजाब हेगला बेंगल हेगला राजपूत टेरिटरीज हेगला रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी रे जो बलबन थिले सी कोन करथिले तांकर जो मिलिटरी डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करिथिले एंड गोटे स्ट्रांग इंटेलिजेंस एंड स्पाई सिस्टम से इंट्रोड्यूस करथिले बस स्पाई सिस्टम को कोन कहथिले बरीद ताको इंट्रोड्यूस करथिले टू मॉनिटर द ऑफिशियल्स एंड रिबेल्स लास्ट सप्रेशन ऑफ इंटरनल रिवोल्ट्स निज पावर को स्ट्रेंथन करबा पई जेति कि एक्सटर्नल रिवोल्ट को सप्रेस करबा जरूरी सेति कि इंटरनल रिवोल्ट्स को भी सप्रेस करबा इंपोर्टेंट सो जो लोकल चीफ्स हेतिले राजपूत नोबल से माने जो रिबेलियन कॉज करूतिले दे वर फर्मली क्रश्ड एंश्योरिंग इंटरनल स्टेबिलिटी कंक्लूजन दो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थिला आउ गोटे डिसिप्लिन मिलिटरी स्ट्रक्चर भी थिला जो मामलुक रूलर्स माने थिले थ्रू दीज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन एंड मिलिटरी स्ट्रक्चर द मामलुक रूलर्स कौन गले दिस स्टेबलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड द दिल्ली सल्तनत एंड तांकर जो पॉलिसीज थिला इट क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जोटा कि जो पछरे जो डायनेस्टीज माने आसिले तांको एनेबल कला बा हेल्प कला टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन सल्तनत रूल इन इंडिया राइट आपण माना पई एटी ओपीएससी एंड यूपीएससी बोथ पई की ऑप्शनल कोर्सेस एटी लॉन्च हेची पीएसआईआर ओडिया एंड होम साइंस ऑप्शनल सो जहां भी फैसिलिटीज मिलुची प्रोविजन मिलुची तीनटा का ऑप्शनल पाई सेम जेमती कि 100% सिलेबस कवरेज रहइबो वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोवाइड हबो देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी एठी करबे एंड रिलेवेंट जहां भी एग्जाम पाई कि रिलेवेंट नोट्स बा मटेरियल्स जहां भी सब थिबो सब अवेलेबल हे जिवो एडमिशन इज करंटली ओपन फॉर मोर इंफॉर्मेशन कांटेक्ट दिस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड दिस क्वेश्चन Okay, question कौन कहला Khalji ruler. The Khalji rulers introduced several economic and military reforms to strengthen the Delhi Sultanate. Discuss the nature and impact of these reforms. एटी गोटे स्टेटमेंट दे देइची से ऑलरेडी स्टेट कर देइची कि खलजी रूलर्स माने जो थिले थ्रू देयर सेवरल इकोनॉमिक एंड मिलिटरी रिफॉर्म्स जो माने से टाइम रे इंट्रोड्यूस करिथिले टू स्ट्रेंथन दिल्ली सल्तनत एंड तार नेचर ऑफ इंपैक्ट को डिस्कस करिया को पचारची ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड मिलिटरी रिफॉर्म्स बुझेला देन इंट्रोडक्शन ने हमें कोन करबा टी खलजी डायनेस्टी ऊपर लेखिबा खलजी डायनेस्टी 1290 रु नै की 1320 से माने पर्टिकुलरली अंडर अलाउद्दीन खलजी से माने कोन करथले गोटे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड मिलिटरी रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस करथिले टू स्ट्रेंथन द दिल्ली सुल्तानेट एटा तो स्टेटमेंट कहिला देन ए जो रिफॉर्म्स गुडा थिला
तार एम कौन थिला व्हाट इज द व्हाट वेयर द एम ऑफ दोज रिफॉर्म्स फर्स्ट की गोटे स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करिबा नोबल्स मान को कंट्रोल करिबा एंड इकोनॉमी को स्टेबलाइज करिबा तो सेति पई ताकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन थिला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रे फर्स्ट द मार्केट कंट्रोल मेजर्स देखिबा कौन फॉलो करथिले मार्केट कंट्रोल मेजर्स मार्केट कंट्रोल मेजर्स रे जे अलाउद्दीन खिलजी थिले सीए एस्टाब्लिश करथिले गोटे स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल पॉलिसी इन दिल्ली मार्केट्स सेपरेट मार्केट्स थिला फॉर separate markets for food grain cloth horses etc and किछि officials थिले जेमति कि शाहना ई मंडी तांको कुआ जाउतला से officials मानको they supervised markets to prevent hoarding शाहना ई मंडी supervised markets to prevent hoarding and black marketing एटा गला मार्केट कंट्रोल मेजर्स एक नंबर रे ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देन सेकंड नंबर रे हम देखिबा रेवेन्यू रिफॉर्म्स से जो लैंड रेवेन्यू थिला जो फर्टाइल दोआब रीजन रे सेटा को फिक्स कर दिया जायतिला लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जायतिला 50% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन होतला जोटा कि जो लोकल इंटरमीडिएरीज माने अछनी तांकर पावर को रिड्यूस करूतला थर्ड regulation of trade and supply regulation of trade and supply रे जो state controlled granaries थिले they ensure the adequate supply of food grains during the famine or shortages strict regulations लागुतला जोटा कि merchants मानकु prevent करूतला from inflating the prices military reforms रे फर्स्ट होची मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी गोटे स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन होतला जे कि सल्तनत को डिफेंड करतला फ्रॉम मंगोल इन्वेजन्स एंड एक्सपैंड हेल्प करतला इन एक्सपैंडिंग द टेरिटरी दग एंड चेहरा सिस्टम दग माने कोन दग होची थिला ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड एटा कोन करतला एटा प्रिवेंट करतला करप्शन को इन कैवलरी रिक्रूटमेंट एंड चेहरा सिस्टम एटा होची कोन डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स एथिरे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करा जाउतला रिडक्शन ऑफ नोबल पावर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और रेगुलेशन सब कैरी आउट होतला इंपोज होतला नोबल्स मानको ऊपर जेटा कि तांको रिबेलियन की कॉन्स्पिरेसी करिवारो प्रिवेंट करतला एबे देखिबा ए सब रिफॉर्म्स जो निया जेतला इकोनॉमिक एंड मिलिटरी रिफॉर्म सर इंपैक्ट कोन थिला फर्स्ट द इंपैक्ट थिला इट स्ट्रेंथेंड द सेंट्रल अथॉरिटी जो नोबल और इंटरमीडिएरीज मानकर इन्फ्लुएंस जेमती कमिला तो सेंट्रल अथॉरिटी रो डोमिनेंस स्ट्रेंथेन हला एफिशिएंट मिलिटरी सिस्टम ए जो सल्तनत थिले तांको ये एनेबल करूतला टू रेजिस्ट द मंगोल अटैक्स एंड एक्सपैंड साउथवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रे प्राइस कंट्रोल इंश्योर होतला लो लिविंग कॉस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड सिटीजन्स देन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन जो स्टेट रो कंट्रोल जेतबे एनहांस हला मार्केट रेवेन्यू मिलिटरी ऊपर
एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रेंथन हला। कंक्लूजन, जो रिफॉर्म्स गुडी को निया जाइतिला दे वर वेरी प्रैग्मेटिक, इनोवेटिव एंड सिग्निफिकेंटली से कौन करतला स्ट्रेंथन करतला एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड मिलिटरी फाउंडेशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इंश्योर करतला जो दिल्ली सल्तनत रो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अछि इट विल रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग अ टर्बुलेंट पीरियड। OPSC OS prelims 2026 ପାଇଁ जो माने प्रिपेयर होतिबे सो बोथ जनरल स्टडीज और CSAT आई मीन GS1 एंड GS2 ପାଇଁ कि एटी से माने कोर्स जॉइन करि परिबे। सिलेबस फुली 100% सिलेबस कवरेज एटी रहइबो GS1 GS2 बोथ ପାଇଁ कि एंड वन ऑन वन मेंटरशिप भी एटी अवेलेबल अछि। 36 टा टेस्ट टोटल आपन को एटी मिलिबो, नोट्स एंड मटेरियल्स आपन को प्रोवाइड कर दिया जिवो एंड ता सहित 19 इयर्स रो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड PYQs भी एटी प्रोवाइड करा जाउची। ओके, एडमिशन इज करंटली ओपन एंड एडमिशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपन जे कोनोसी मोड रे चाइबे नै परिबे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन स्क्रीन रे दिया जाइतबा नंबर रे कांटेक्ट करिवे। Read the question. The rule of the Tughlaq dynasty is often described as a mixture of brilliance and failure. Critically examine the policies of Muhammad bin Tughlaq. Tughlaq dynasty, it witnessed both ambitious experiments and administrative failures. Particularly kaha under है? Particularly under Muhammad bin Tughlaq. It a 13, okay. 51 and तांकर जो policies थिला it marked a remarkable vision but suffered due to poor implementation. Vision thile भी it suffered poor implementation, so leading historians to describe his rule as a mix of what? Mix of brilliance and failure. Major policies कौन थिला? What were the major policies? Major policies रे हमर आसीबो first the transfer of capital. Transfer of capital कोठु कोठी की दिल्ली रु नै की दौलताबाद. ठीक अछि, capital was shifted from Delhi to Daulatabad. कौन पाई की to control the Deccan and improve the administrative integration. Second, ओके आउ गोटे एठी जिंस मु कहि दउची किंतु ए जो ट्रांसफर टा भी हैला, हाउएवर ए जो फोर्स्ड माइग्रेशन लोक माने माइग्रेट कले, फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल कॉज्ड हार्डशिप एंड रिसेंटमेंट. इवेंचुअली ए जो डिसीजन टा थिला ताकू रिवर्स करा गला. इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी जेमती कॉपर आउ ब्रास कॉइन्स introduce hela as token currency to replace the silver ones. So introduce the हेई गला किंतु किछ गोटे strict regulation लागू हेलानी. So the lack of strict regulation led to large scale counterfeiting.
counterfeiting, causing economic chaos. And ए जो scheme टा जो थिला टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करिवार ताको अल्टीमेटली विथड्रॉ कर दिया गला. रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन द दोआब. हेवी टैक्सेशन जो गंगा यमुना दोआब रीजन जो अच्छी थिला सेठी कौन करा गला हेवी टैक्सेशन सेठी इंपोज करा गला टू इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू. एंड ए जो पॉलिसी टा थिला इट कोइंसाइडेड विथ द फेमाइन एंड क्रॉप फेलियर. Crop failure resulting in peasant revolts and decline in agriculture. Expansionist and military campaign. Expansionist and military campaign. Planned expeditions जो निया जाउतला toward the Khurasan and China and campaigns in the Deccan. Many of these projects were costly and impractical, draining the state resources. एबे हमें तार असेसमेंट गोटे करिबा ब्रिलियंस एंड फेलियर को हमें साइड बाय साइड देखिबा. What were the brilliance and what caused the failure? First the brilliance एथिपई कहना इनोवेटिव और फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज थिला. फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज. देन अटेम्प्ट करा जाइतला एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन केमती करा जिवो ऑफ डिस्टेंट रीजन्स. अटेम्प्टेड administrative integration of distant regions. Vision to strengthen the economy and empire. ओके एटी देखिबे गोटे जिंस नोटिस करिवे कि जहाँ भी ब्रिलियंस रेडी पॉइंट्स नोटेड हेची दे आर ऑल अबाउट देयर विजन. से एटा करिबा को चाहुतिले किंतु से ताको कंसोलिडेट करि पाइलेनी कि प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करि पाइलेनी. हेंस कॉज्ड द फेलियर. फेलियर होची फर्स्ट कोन पुअर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन. कंसल्टेशन रे लैक थिला. Lack of consultation with the nobles and administrators. Then policies caused economic instability. ऊपर हमें मेंशन करछे and rebellion. Economic instability रू rebellion हला. Conclusion. मोहम्मद बिन तुगलक तांको जो रियाइन से एटा इलस्ट्रेट करे कि विजनरी आइडियाज विदाउट practical execution is not sufficient and it will lead to failure. Despite his intellectual brilliance आमे देखले तांको पाखे intellectual brilliance थिला administrative किदु administrative miscalculation जोगु तांकर जो stability थिला दिल्ली सल्तनत रो सेटा weak हे गला. ओके एंड एठी जो कोर्स लॉन्च हेची सेठी आपण मानको वैल्यू एडेड फीचर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मिलिबो इन अ टोटल लर्निंग इकोसिस्टम जेमति कि रिवीजन सपोर्ट मिलिबो टारगेटेड क्लासेस रहिबो फॉर GS1 एंड GS CSAT बोथ विथ रिकॉर्डेड वीडियो एक्सेस फॉर एनी टाइम रिवीजन कहना जरूरी नै ना समस्त लाइव देखि परिबे. सो देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिकॉर्डेड वीडियो एक्सेस. लाइव इंटरैक्शंस रहिची डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस रहिबो वन ऑन वन मेंटरशिप एटी प्रोवाइड हबो एक्सक्लूसिव रिसोर्सेस आपण मिलिबो जदी स्टडी नोट्स कहली एंड PYQ रो बुकलेट भी. कंप्लीट टेस्ट पैकेज जो 36 टा टेस्ट मु मेंशन करतली ता भितर जदी हम ब्रेक डाउन करबा तो 28 टा टेस्ट आपनकर GS1 रो रहइबो एंड 8 टा टेस्ट रहइबो CSAT रो एंड ए 28 टा टेस्ट रो 22 टा रहइबो सेक्शनल एंड 6 टा रहइबो फुल लेंथ टेस्ट. देन 4 टा सेक्शनल एंड 4 टा फुल लेंथ टेस्ट आपनकर CSAT रो रहइबो. एनालिसिस रे आपनको डिटेल आंसर क्विज तो प्रोवाइड हेई ही जिवो टेस्ट रो. देन ता संगे एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस एंड पोस्ट टेस्ट डिस्कशन क्लासेस भी एटी प्रोवाइड हबो. बाइलिंगुअल रहिबो टेस्ट जेमति कि क्वेश्चंस बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे आपनको अवेलेबल कर दिया जिवो. फ्लेक्सिबल मोड्स रहिबो आपण चाहिले ऑनलाइन तक नहीं परिबे ऑफलाइन नहीं परिबे. बेंचमार्किंग रे ऑल ओडिसा रैंकिंग आपनको प्रोवाइड हबो सो दैट यू विल एनालाइज योर पोजीशन योर प्रिपरेशन
एंड बोनस मटेरियल होची 1 ईयर करंट अफेयर्स मैगजीन एठी इंक्लूड करा जायछि. Next question, discuss the significance of fundamental rights article 19 to 24 sorry in safeguarding individual liberty in India. How have these rights evolved through judicial interpretation? Read the question. फंडामेंटल राइट्स पर्टिकुलरली कोठु नै कोठी क्वेश्चन पचारछि 19 रु नै कि 24 दे फॉर्म द कोर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इन इंडिया एंड ए जो एतिकी आर्टिकल भितर जो राइट्स कवर होची दे गारंटी फ्रीडम different types of freedom जेमती कि protect against different types of freedoms, then protection against exploitation, ensure the dignity, while judiciary has expanded their scope through progressive interpretations. Significance कौन of article 19 to 24 in protecting the individual liberty. First, protection of civil liberties. Civil liberties ର protection. Article 19. Article 19 कौन guarantee करे 6टा essential freedom से guarantee करछि. First तो लक्ष्मीकांत आपण cover करथिबे त जानथिबे. First हमर कोन आसीबो? First आसीबो freedom of speech and expression. तापरे आसीबो assembly. तापरे आसीबो हमर association. Then movement, residence and profession. And age of freedom guda rahila, they form the foundation of democracy and political participation. Then protection in criminal justice. Protection in criminal justice. 20 and 22. Article 20 से कौन करूची? से safeguard करूची individual मान को from ex post facto laws. Safeguard करूची. Okay. Go to ex post facto laws, double jeopardy and self incrimination. Whereas Article 22 से कौन provide करूची? Protection against arbitrary arrest and detention. So it ensures legal representation and production before a magistrate. Article 21 तो समझते जानती है right to life and personal liberty. Article 21 से एटा ensure करे कि कौनसी person, no person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. And it has become the most expansive right. It has become the most expansive right protecting the dignity and human development. Fourth record, protection against exploitation. 23 रो 24 23 24 23 कौन prevent करे? Human trafficking and
forced labor. 24 कौन करे? It bans child labor in hazardous industries, safeguarding the vulnerable groups. ଏବେ ଆଙ୍କର evolution ଟା କେମିତି ହେଇଛି? evolution ରେ ଆମର first case ଆସିବ judicial interpretation ର मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जोटी सुप्रीम कोर्ट कौन कला आर्टिकल 21 रो जो स्कोप थिला ताको एक्सपांड कला टू इंक्लूड फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर देन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एथरे कोन हबो कोर्ट जो कोर्ट कोन इंट्रोड्यूस कला कोर्ट इंट्रोड्यूस द बेसिक structure doctrine protecting the fundamental rights from arbitrary amendments. third amar through the PIL through ru कोन करियबो जोडा को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहउचंदी कोर्ट कोन गला आर्टिकल 21 रो स्कोप को आहुरी ब्रॉड करिकी इंक्लूड कला जेमति की क्लीन एनवायरनमेंट livelihood privacy education etc. conclusion article 19 ru 24 जो आमे देखिले they serve as vital safeguards of what of individual liberty in India through dynamic judicial interpretation ये जो rights माने रहिले they have evolved into a powerful judicial interpretation through rights evolved into a powerful instruments for protecting human dignity and strengthening constitutional democracy. Beyond the divide and move on approach. दीटा टॉपिक बा सब्जेक्ट को आइसोलेट करके पढ़ीबाटा जोटा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट माने जोटा फॉलो करदी सेटा एटी फॉलो होउनी we are moving we are adopting an incremental strategy or a holistic strategy where subjects are layered rather than just split goal होची कि basic understanding रो move on करिकी गोटे complex interdisciplinary understanding develop करिबा. Next question, read the question. Analyze the major administrative, economic and military developments during the Delhi Sultanate, during the slave, Khalji and the Tughlaq dynasties. How did these changes shape the political structure of medieval India? दिल्ली सल्तनत केबेरु केबे थिला 1206 रु नै के 1526 पूरा हमें देखिया गले इट विटनेस्ड सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड मिलिटरी ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द मैमलुक डायनेस्टी हे गला माने जो स्लेव डायनेस्टी अंडर स्लेव खलजी तुगलक डायनेस्टी ओके एंड ए जो डेवलपमेंट गुडा थिला कंसोलिडेटेड द सेंट्रल अथॉरिटी and reshaped the political structure of medieval India.
Administrative developments. Administrative developments are first the centralized bureaucratic system. सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो स्लेव रूलर्स माने थिले स्पेशली इल्तुतमिश से गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज करथिले सच एज दीवान ई विजारत ऑलरेडी डिस्कस हेची एगुडा दीवानी एंड दीवान ई अर्ज एटा फाइनेंस पई थिला एटा मिलिटरी पई थिला एंड इक्ता सिस्टम भी हमें डिस्कस कर सके. सेकेंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोनार्की जो घियासुद्दीन बलबन थिले सी थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप केमती प्रमोट करथिले ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स जोड़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक अंडर रे इंट्रोड्यूस हेतिला जोड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म्स किछि कैरी आउट करथिला सच एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल है दिल्ली रु दौलताबाद को ट्रांसफर कर देले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइज है जोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस पर फेस कला बट से गुडी का हेतिला. इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स रे फर्स्ट आसीबो रेवेन्यू रिफॉर्म्स. इनफॉरमेशन सेम अच्छी आई एम जस्ट टेलिंग यू कौन कौन इनक्लूड करेंगे आंसर रे. फर्स्ट रेवेन्यू रिफॉर्म्स आम डिस्कस करें केमी सिस्टमेटिक लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होता जोटा कि स्टेट रो इनकम को बड़ एक्सपांड करथिला पर्टिकुलरली जो फर्टाइल रीजन थिला दोआब रीजन. मार्केट रेगुलेशन अलाउद्दीन खिलजी कौन करथिले से मार्केट कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस करथिले जोटा कि प्राइस फूड ग्रेन हैला हॉर्सेस मानकर हैला एसेंशियल कमोडिटीज रहला रेगुलेट करूथला. एग्रीकल्चरल एंड फिस्कल पॉलिसीज एग्रीकल्चरल एंड फिस्कल पॉलिसीज रे कौन तुगलक रूलर्स से कौन करथिले अटेम्प्ट करथिले टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन एंड इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू दो थ्रू द न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज. मिलिटरी डेवलपमेंट is standing army and reforms. स्टैंडिंग आर्मी एंड रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी से गोटे बड़ा स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करुले. दाग जो हॉर्स ब्रांडिंग एंड चेहरा ऑलरेडी डिस्कस हेची ताको इंट्रोड्यूस करथिले टू प्रिवेंट करप्शन. सेकंड डिफेंस एंड एक्सपेंशन रे सल्तनत से सक्सेसफुली रेजिस्ट करथिले मंगोल इन्वेजन्स एंड एक्सपैंडेड इनटू द डेक्कन. स्ट्रेंथनिंग इंटरनल security. Balban established strict law and order measures and intelligence networks to suppress the rebellions. Impact कौन था? Impact on political structure of medieval India. फर्स्ट जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थिला सेटा सुल्तान को हाथ रे थिला. देन डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिटरी इंस्टीट्यूशंस इट स्ट्रेंथेंड गवर्नेंस. इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स रीजन्स अंडर अ सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल फ्रेमवर्क. Lastly, formation of administrative practices that influence later regimes. Including the Mughal Empire. Conclusion is administrative efficiency, economic regulation and military organization जो थिला स्लेव खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी अंडर इट लेड द इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल so significantly shaping the political structure of medieval India. Clear? Last question. The fundamental rights under Article 19 to 24
form the core of India's democratic framework. Discuss their scope, limitation, and the role. Just a second, it is question ta incomplete achi. I will just write role of the judiciary in practicing, sorry, protecting these rights. गोटे वेरी सिमिलर क्वेश्चन आमे आ सांगर आमे गोटे डिस्कस कर सारे ऊपर सो आमे खाली यार टिके स्ट्रक्चर ही देखिदेबा केमती स्ट्रक्चर आर फॉर्म करिवे क्वेश्चन तो 95% सेम ही अछि पढ़न थरे क्वेश्चन टा 10 सेकंड्स में निजे निजे टाइम नहीं स्ट्रक्चर भी पाखापाखी सेम ही रहिबो कंटेंट भी पाखापाखी सेम ही रहिबो खाली टिके ताको टिके एक्सपांड करिके लिखिबे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन रे जेमति कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 टू 24 दे फॉर्म द बैकबोन of India's democratic framework by safeguarding civil liberties and human dignity. So they ensure freedom, equality, and protection from exploitation while maintaining a balance between individual liberty and societal interests. स्कोप कौन स्कोप से सेम ही रहिबो ऊपर हमें डिस्कस करिचे जस्ट खाली हेडिंग्स टिके ब्रीफली देखि देबा स्कोप ऑफ आर्टिकल 19 टू 24 फर्स्ट हमर होची फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स रे हमें कौन कवर करबा आर्टिकल 19 टाकू जोथरे कि छटा फ्रीडम्स रहउची जेमति कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन एला असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन जे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिसेंट एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को एंश्योर करे सेकंड हमर रहइबो प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल जस्टिस आर्टिकल 20 एंड 22 आर्टिकल 20 से इंडिविजुअल मन को प्रोटेक्ट करूची फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज डबल जेओपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 22 कौन करूची इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट हला डिटेंशन एंश्योरिंग लीगल काउंसिल एंड जुडिशियल ओवरसाइट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 protects life and personal liberty through procedure established by law. It evolved to include the rights such as dignity, livelihood, privacy, clean environment. Okay, ऊपर already सब discuss ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି double mention କରୁନି. Protection against exploitation. एथिरे कौन जीवो 23 जीवो हमरो एंड 24 जीवो लास्टली 23 कौन करे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करे एंड 24 कौन करे सी चाइल्ड लेबर को बैन करिछि इन hazardous industries protecting the vulnerable groups but एमानकर भी किछटा लिमिटेशंस अछि सो what are the limitations एडा हला फर्स्ट द रीजनेबल article 19 freedoms are subject to reasonable restriction in the interest of sovereignty, public order, security, morality, etc. Preventive detention laws under Article 22 allow the detention under the specific circumstances, and rights must be balanced with
collective welfare and state security. Judiciary ro role kono? Role of judiciary in protecting these rights. First it mention karibe Menka Gandhi case. Menka Gandhi versus Union of India case. Okay, just a second. हाँ, Menka Gandhi versus Union of India जे कि Article 21 रो scope को और expand कला to include the fair, just and reasonable procedures. Then Keswanand Bharati versus State of Kerala. एथेरे कौन होइतला जो basic structure doctrine को ensure करा गला for the protection of fundamental rights from arbitrary constitutional amendments. Third, PIL. PIL रे कौन हबो courts मानको courts have expanded rights to include environmental protection, legal aid and prisoners' rights. Conclusion, 19 to 24 article, they ensure essential freedom and protection from exploitation while maintaining the constitutional balance through reasonable restrictions and active judicial guardianship, strengthening India's democratic ethos. Okay, so OPSC OS prelims पाएंगे past 19 years starting from 2006 to 2025 जाके सब जगह subject and chapter wise question with answer and explanation एठी आपनकर cover हेची book रे, book already launch हेई सारची. So आज रो जतिको भी question थिला हमें ताको सब discuss कर साचे. Next week जहाँ exam हबो ताकू आमे further discuss करबा. So thank you for watching, thank you for your patience, keep studying hard. That is it for today. Thank you.